Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to study Government Proposes Changes to the Forest Act. This article was in news in the month of October, that is last month. बिल्कुल last month ये article news में था, तो इसको हम अच्छे से detail में cover करने जा रहे हैं. Alright, we had already covered it in the Hindu newspaper analysis, but today we will cover it in great detail. We will study all the important provisions of this particular act. So let's get started without any delay. PDF of this lecture will be uploaded on my Telegram channel. Simplifying UPSC with ease. You can download the lecture PDF from there directly. Directly आप PDF को वहाँ से download कर सकते हैं. ठीक है? तो शुरू करें आज का lecture. Also do not forget to take short notes during the class. क्लास में short notes लेते रहिएगा ताकि आपकी रिवीजन के टाइम पे आपको easy लगे. ठीक है? रिवीजन आपके ऊपर एक burden की तरह नहीं आए. तो इसलिए इसके शॉर्ट नोट्स लेते रहिएगा लेक्चर के साथ साथ. ईच एंड एवरी प्रोविजन, ईच एंड एवरी डिटेल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मेक अ नोट ऑफ इट. Before we start this lecture, here is a small announcement. Unacademy is launching UPSC CSE batches starting from 24th of November. These batches will be for 2022 and 2023 aspirants. And these batches will be in Hindi also, in English also. According to your language preference, you can join these batches. And do not forget to use code ARPITA10 so that you can get directly 10% discount on your Plus subscription. The best part of the new feature that we have launched, which is valid till 24th November, is the standout feature, wherein you can have a chance to stand out from the crowd with the experienced coach. If you take a 1-year iconic GS subscription, you will be getting an experienced coach personally, and you will get 12 months of optional subscription free of cost. And if you are taking a 2-year iconic GS subscription, again with the experienced coach, you will be getting 24 months accessibility to the optional subscription for free. And for 3 years iconic GS subscription, 36 months optional subscription will be given to you free of cost, along with the experienced coach. This offer is valid only till 24th November. So what are you waiting for? Get your experienced coach and get optional subscription free of cost with your prelims and mains preparation. Plus, if you take GS Combo, Iconic GS or Iconic Combo subscriptions for 1 year or above, you will be getting 45,000 rupees worth test series of optional pre and mains free. Absolutely free, which are curated as per the changing UPSC pattern also. So do not forget to be a part of this wonderful, amazing initiative that Unacademy has launched to help you secure your goal, crack your exam in your first go. Now let us understand what was in the news. So in the news in the month of October 2021, it said Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change had proposed several amendments, several changes to the Forest Conservation Act of 1980, that is FCA. Now these amendments, as per the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, may enable infrastructure projects to come up in the forest areas more easily. तो ऐसा कहा गया अक्टूबर के मंथ में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि हम ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं और इन अमेंडमेंट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली फॉरेस्ट एरियाज में आ सकते हैं. This proposal is a part of amendments to the existing Forest Conservation Act. और ये जो डॉक्यूमेंट था ये 15 दिन तक पब्लिक डिस्कशन के लिए ओपन था. इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक डिस्कशन फॉर 15 days so that people can read it and give their opinion. Now when we talk about Forest Conservation Act, this act came up in 1980. It was amended in 1988. ओके और अमेंडमेंट के पहले ना इसको परमिशन की जरूरत होती है, ये बात याद रखिएगा. इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट. ओके, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसको देनी जरूरी है. So let us understand the recent proposals which have been launched, which have been raised by the Union Ministry to exempt land acquired before 1980 by public sector bodies such as railways. यानी कि इस एक्ट के कवरेज में जो भी जमीन रेलवे जैसी पब्लिक सेक्टर बॉडीज ने 1980 से पहले एक्वायर किया उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे कवरेज से. As of today, land holding agency like Rail, NHAI, it is required to take approval under the Act. But now, if these amendments are proposed, if these amendments are finalized, approved, then such permission will no longer be, necessary.
To make offences under Modified Act punishable with simple imprisonment for a period which may extend to 1 year and it can be cognizable and non-bailable. तो जो भी सिंपल ऑफेंसेस इस एक्ट के तहत होंगे या जो भी पनिशमेंट्स मिलेगी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, या तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी और नॉन बेलेबल उसको बना दिया जाएगा कि उस 1 साल के पीरियड को प्रॉपर आपको इम्प्रिजन किया जाएगा. प्रोविजंस फॉर पीनल कॉम्पनसेशन टू मेक गुड फॉर द डैमेज ऑलरेडी डन. जो भी अभी तक डैमेज हो गया है तो उसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. Removing zoos, safaris, forest training infrastructures from the definition of non-forestry activities. They will be included in the definition of forest activities only. So these are the recent proposals which were open to the public. Now they are awaiting the parliamentary approval. So let us understand all the key features of this proposal. The proposed amendment seeks to make additions and changes to section 1 and 2 of the act. अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं. We are studying in detail now. इस एक्ट का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की बात की गई है. नाउ अ न्यू सेक्शन 1A हैज बीन एडेड. सो इन द प्रपोज्ड न्यू सेक्शन प्रोविजन हैज बीन एडेड. एक प्रोविजन ऐड किया गया है टू एग्जेम्प्ट एप्लीकेशन ऑफ FCA ऑन फॉरेस्ट लैंड दैट इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल. वो फॉरेस्ट की जमीन जो कि अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन या फिर ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है उसको FCA के कवरेज से बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, जिसमें एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग का यूज होता है. Exemption is subject to terms and conditions जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले डाउन करेगी. The responsibility of laying down those terms and conditions or specifying them will be on central government only. And second is new explanation has been added to section 2 also. It states that survey, reconnaissance, prospecting, exploration or investigation for future activity in the forest, it will not be classified as non-forestry activity. उसको forestry activity ही कह दिया जाएगा अगर आप future activity से related कोई exploration या investigation या survey कर रहे हो आप. That mean कोई भी survey work जो होगा जिसमें prior permission नहीं मिली, ठीक है, उसको add किया जाएगा forestry activity में. एक्सेप्शन यही है कि अगर वो लैंड एरिया जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एरिया में आता है या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के एरिया में आता है तो उस केस में इस तरीके की एक्टिविटी को नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी कहा जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पनिशमेंट. So Environment Ministry proposes adding a clause to make punishments under Modified Act punishable with simple imprisonment of extended to 1 year जिसको non bailable बना दिया जाएगा. ठीक है, और अगर कोई लॉस एक्चुअली हो रखा है, डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी, फॉर दैट केस penal compensation will be given. So this is all about the recent changes which have been proposed to the Forest Act. Now let us understand what is the FCA Act 1980. It's a principal legislation जो कि कंट्री में डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और रेगुलेट करने के लिए लाया गया था. So basically it will stop any kind of cutting of forest or felling of forest for non-forestry activity. ठीक है, एंड क्लियरेंस प्रोसेस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. क्लियरेंस प्रोसेस इंक्लूड्स सीकिंग और आस्किंग कंसेंट फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट होल्डर्स एंड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज. सेंटर के पास ये पावर होगा कि वो ऐसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है या अलाउ भी कर सकती है, एंड इट कैन स्टेट द टर्म्स एंड कंडीशंस आल्सो. एंड सुप्रीम कोर्ट इन 1996 एक्सपैंडेड द कवरेज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. उन एरियाज में डाल दिया था, to those areas this coverage was expanded that satisfied the dictionary definition of forest. Okay, and earlier only specific lands were considered as forest. Now the dictionary definition of forest, ठीक है, has been included in the coverage of this particular act. So this was all about the government proposes changes to Forest Act lecture for today. I hope you enjoyed this lecture. उम्मीद करती हूँ आपको ये lecture अच्छे से समझ आया हो. On this note, we are wrapping up the class. Thank you everyone for participating.